एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछा गया है CSIR लाइफ साइंस एग्जाम में फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Progression across G1S boundary followed by entry into S phase is promoted by the activation of which one of the following protein complexes? So during the cell cycle, what happens? There are requirement of different type of cyclines as well as CDKs in different phases of the cell cycle. So यहाँ पे कुछ cyclines as well as CDKs in different phases of cell cycle. Like first is our G1 phase. Next is the G1S phase. Next comes our S phase. Next is the M phase. जो G1 phase में जो cycline involved है, that is cycline D. G1S phase में क्या है? Cycline E. In the S phase comes the cycline A. In the M phase comes the cycline B. In the similar manner, as there are different type of cyclines in different phases of the cell cycle, there is also different type of CDKs which are present. So in the Z1 phase, there is requirement of CDK4 and CDK6. In the G1S phase, there is requirement of CDK2. In the S phase, CDK2 and CDK1. M phase में क्या है? CDK1. So you have to remember the cyclines and CDKs which are involved in different phases of the cell cycle. From this part, you can get questions in the following way as well as from in the sentence format. Okay. So ये क्या पूछ रहा है कि G1 से S फेज में पहुंचते वक्त कौन सा साइक्लिन और CDK का इन्वॉल्वमेंट है. सो G1 S फेज में साइक्लिन E and CDK2 are responsible. So cyclin CDK2 and cyclin E is present in the B option. So B is the correct option. Let's say next question. ये जो question है, it is asked in June 2024. ये जो question है, they are regulating this type of proteins which are present. They are regulating the cell cycle regulation. Okay. जो ये जो V1 protein जो present है, it is a inhibitory protein. So ये जो V1 जो protein जो present है, as it is a inhibitory kinase, ये जो V1 है, it is a kinase. That means it will add the phosphate group. अगर ये phosphate group add करेगा, किसको add करेगा? It will add the phosphate group to the CDK. Then it will not be in the active form. It will not go into the active form. When a phosphatase will come and it will remove this inhibitory phosphate, during this time only there will be activation of the CDK. V1 जो kinase जो present है, what it will do? It will add the phosphate to tyrosine 14 and threonine 15. Okay. So when the cell is present, ये जो है ये CDK को activate करने नहीं देगा. जब when the right time will come, during this time what happens? There is a protein which is known as CAT. That means CDK activating kinase. So what it will do? It will help in phosphorylating threonine 161. There is specific place in this protein, that is threonine 161, in which the CAK will come and phosphorylate. Okay. अगर ये this is activating kinase, till then it will not help in the activation because यहाँ पे है हमारा inhibitory protein. Okay, inhibitory kinase यहाँ पे phosphorylate किया है. So for this phosphate needs to be removed. इस phosphate को remove करने के लिए चाहिए CDC phosphatase. Okay, which will help in removing this phosphate. Then only the CAK will help in activation of the CDK. Okay. So ये जो phosphatase जो present है, इसका नाम क्या है? CDC25 है. It is CDC25. So let us match this. V1 जो present है, ये कहाँ पे होगा? It phosphorylates inhibitory site in the CDK. ये जो है ये phosphorylate करेगा inhibitory site in CDK. So A is 2. It is present in A option and B option. Okay, from this 2 we will get the correct answer. Next is P27. ये जो P27 जो present है, what it does? यहाँ पे एक cyclin और CDK जो present है, it is active cyclin and CDK. Okay. So ये जो है P27 जो present है, what it will happen? It will help in inactivating this active CDK. Okay, अगर कुछ problem होगा, then this P27 will come and inhibit this. When it will inhibit in the early G1 phase. Okay, so let us see which option is correct for this.
सो यहाँ पे P27 जो प्रेजेंट है, इट एक्टिवेट्स नो suppress G1 as CDK and as CDK after DNA damage. No, suppress G1 as and as CDK activity in G1 phase. Yes, P27 it is suppressing the G1 as CDK and as CDK activities in the G1 phase. ये G1 phase में ही इनको suppress करेगा. Next is P21. What this P21 does? It suppress G1 as CDK and as CDK activity after damage. जब कभी भी कुछ डैमेज होगा during this time, it will help in the suppression. This P21 protein. Next is CDH1. What the CDH1 will do? ये जो CDH1 जो प्रेजेंट है APC के साथ ये बाइंड होगा CDH1. Okay. And it will help in activation of the APC-C in late mitosis and early G1 phase. We will see how these are being regulated. ये जो CDH1 जो present है, जब APC एक protein है, this APC when it will bind with the CDH1, what it will do? It will help in regulating the mitotic cyclins. So it will enter from the anaphase to the G1 phase. And when this APC is bonded with the CDC20 during this time, it will help in cutting the securin protein. अगर securin degrade हो गया, then it will allow this metaphase to come into the anaphase because the separase will be activated. Now अगर separase activate है, then it will help in degradation of the cohesins by which the two sisters will be separated and they will go towards two opposite poles. Okay, so in this way, this option CDH1, what it will do? It activates APC in late mitotic and early G1 phase. Okay, so option A is the correct statement. Okay, let's discuss the next question. ये जो question है, it is also from the same topic. यहाँ पे और एक extra protein है जो कि है CAK. हम क्या डिस्कस किए थे अभी? जो CAK जो प्रेजेंट है, इट इज ए एक्टिवेटिंग काइनेज. ये जो CAK जो प्रेजेंट है, थियोनाइन 161 पे फॉस्फोराइलेट करेगा. एंड द V1 प्रोटीन विच वाज प्रेजेंट, इट वाज फॉस्फोराइलेटिंग थियोनिन 15 एंड टायरोसिन 14 एंड थियोनिन 15. यहाँ पे और एक प्रोटीन था जो कि है CDC25. ये जो प्रोटीन है ये एक फॉस्फेटेज है, दैट मीन्स इट विल रिमूव द फॉस्फेट. ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो प्रेजेंट था, फॉस्फोराइलेट हुआ था, ये फॉस्फेट को CDC25 रिमूव करेगा. देन ओनली दिस वर्क ऑफ द CAK विल बी डन. ओके, सो ये जो CAK जो प्रेजेंट है, व्हाट इट विल डू? इट विल फॉस्फोराइलेट द थियोनाइन 161. ओके, सो यहाँ पे A जो है, we can see here it is matching with this fourth option. CAK phosphorylates an activating site in the CDK. Okay, so A is 4. A जैसे कि 4 हुआ, first option is the correct one. चलिए देखते हैं next point, that is the V1 kinase. V1 जो kinase जो present है, it is the inhibitory kinase. B is 3. It phosphorylates inhibitory site in CDKs, primarily involved in suppressing CDK1 एक्टिविटी बिफोर माइटोसिस. ये जो है बिफोर माइटोसिस से पहले ये सप्रेस करेगा CDK1 को. ओके, नेक्स्ट इज P27. P27 क्या कर रहा है? इट सप्रेसेस G1 as CDK and as CDK एक्टिवेशन इन G1. helps cell withdraw from cell cycle when they terminally differentiate. Phosphorylation by CDK2 triggers its ubiquitination by SCF. ये जो प्रेजेंट है, ये P27 जो प्रेजेंट है, इट इज ए CKI. ओके, ये जो है हम अभी देखे थे, ये है एक CKI P27. When this will bind with this CDK and cyclin, it will not allow the cell to go into the next phase. Okay, ये जो है it is being regulated in the G1 phase. Okay, so next P21 next suppress G1 as CDK and as CDK activity following DNA damage. ये P21 जो present है, ये क्या करेगा? It will suppress the G1 as CDK and as CDK activities following damage. जब कभी भी एक damage होगा during this time, P21 is activated. So A is the correct option. So here
there are other proteins also which are working in the cell cycle regulation. Like ये एक प्रोटीन है जो कि है P53. ओके, ये जो P53 जो प्रेजेंट है, इट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म. यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि है MDM2. When this MDM2 is activated, what it will do? It will hold the P53, जिसके लिए P53 क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा. ओके, जब कभी भी कुछ माइटोजन फैक्टर्स आएंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज अनदर प्रोटीन विच इज नोन एज ARF. ये ARF पकड़ लेगा किसको? MDM2 को, एंड इट विल इनएक्टिवेट द MDM2. जैसे कि MDM2 इनएक्टिवेट हो गया, ड्यूरिंग दिस टाइम द P53 इज स्टेबल नाउ. ठीक है, सो जब कभी भी P53 स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा? ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज एपोप्टोसिस और सेल साइकिल एरेस्ट. दैट मीन्स द सेल कैन नॉट गो इनटू मूव इनटू द नेक्स्ट फेज. ये कब होगा? व्हेन देयर इज सम ऑफ द डैमेज. Okay, now let's discuss the next question. During cytokinesis, a small GTPase rho A localizes to the equatorial membrane above the spindle midjoint. The localization or activity of rho A is potentially modulated by. ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कैसे साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे कौन कौन से प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा. चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है विच इज नोन एज स्पिंडिलिन प्रोटीन. इसका एग्जांपल है MKLP1. व्हाट इज दिस? इट हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ ECT2 जो कि है एक रो GEF. ओके, जो रो A अगर प्रेजेंट है, इट विल बी इन द GTP फॉर्म as well as it will be in the GDP form. ये एक्टिवेशन फॉर्म में होगा और as ये डीएक्टिवेशन फॉर्म पे होगा. For that case it requires the role of GEF. So what is does this rho A GEF? It will convert the rho A into the active form. अगर ये rho A एक्टिव हो गया, during this time what it will do? It will help in the activation of F-actin and myosin, जिसके वजह से होगा साइटोकाइनेटिक फरो का जनरेशन. ओके, जैसे कि साइटोकाइनेटिक फरो का जनरेशन होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस वन सेल, ए सिंगल सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेल. ये जो सिंगल सेल जो प्रेजेंट है ये दोनों सेल में डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे और एक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है दैट इज द ATM एज वेल एज ATR. ये जो ATM और ATR जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है, व्हेन दे आर एक्टिवेटेड, जब कभी भी डीएनए का डैमेज होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर नीड्स टू बी सम ऑफ द चेक पॉइंट, ताकि वो सिंथेसिस फेज में, ताकि एक फेजेस सेल साइकिल का जो फेजेस है वो सिंथेसिस फेज में ना जाए. ठीक है, सो फॉर चेकिंग दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू प्रोटीन्स दैट इज द ATM एंड द ATR. ये ATM और ATR ये क्या कर रहे हैं? ये जो ATM जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट होगा जब कभी भी डीएनए का दोनों स्ट्रैंड में डैमेज होगा, और ATR जो प्रेजेंट है वो कब एक्टिवेट होगा? जबकि एक डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड में अगर डैमेज होगा तो ATR का इन्वॉल्वमेंट होगा. ओके, सो हियर लेट अस सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए, ये जो साइटोकाइनेसिस होने के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सा प्रोटीन का रिस्पॉन्सिबल है. सो ये रो GEF ECT हम देखे थे, इट वॉज अ GEF, सो दिस इज द करेक्ट वन. एरोरा B काइनेस, और एक है MKLP1 काइनेसिन, ये भी प्रेजेंट था वो एग्जाम्पल पे. ATM एंड ATR और ATR जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट था ड्यूरिंग द डीएनए डैमेज. डीएनए जब डैमेज होगा उस चेक पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए ATM और ATR का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो रहा था. सो this ATM and ATR they are not involved during the process of cytokinesis. So this is a wrong option. E, जैसे कि E ऑप्शन नहीं है, so we can eliminate the C option. So aurora B kinase और एक प्रोटीन है aurora B kinase. See here, this aurora B kinase which is present, it is involved during many things, like it is helping in the chromatin condensation, nuclear envelope breakdown, fragmentation of Golgi apparatus as well as spindle formation. So ये aurora B kinase जो present है, this is also involved during this formation of the cytokinesis, because it is breaking the nuclear envelope as well as it is helping in the fragmentation of Golgi. Okay, जैसे कि ये ऑप्शन अरोरा A काइनेज ठीक है, सो यहाँ पे B is also the correct one. PLK1 kinases is also responsible for during this process of cytokinesis. So A, B, C, D is the correct. A, B, C, D, it is present in the
बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है कि मेटाफेज से जो एनाफेज का ट्रांजिशन हो रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इज डिग्रेडेड। मेटाफेज में कौन सा साइक्लिन इन्वॉल्व था, इट वाज अ साइक्लिन B1। जब कभी भी मेटाफेज से एनाफेज जाएगा यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा। यहाँ पे कौन सा साइक्लिन प्रेजेंट है, इट इज अ साइक्लिन B1। यहाँ पे सीडीके का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, सीडीके का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दे आर एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, लेकिन इसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोटिक साइक्लिन इंक्रीजेस ग्रेजुअली थ्रू आउट द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे बोल रहा है कि माइटोटिक फेज के लिए जो साइक्लिन जो चाहिए इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, बट द एक्टिविटी ऑफ माइटोटिक CDK1 increases suddenly at the onset of M phase। ये बोल रहा है कि CDK1 का जो एक्टिविटी जो है ये एक्टिवेट तभी हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग सडनली ऑन द ऑनसेट ऑफ M phase। जब भी M phase आ रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली इट इज एक्टिवेटेड। दिस इज बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इज एक्टिव CDK1 सब यूनिट इज सिंथेसाइज्ड इन द M phase। ये जो CDK, जहां कभी भी आप देखेंगे कि CDK प्रेजेंट है, the CDK are not synthesized, they are present throughout the cell cycle, its activation and deactivation is taking place। Okay, so option A is the incorrect one। Next option B, mitotic cycline is sequestered in the cytosol। ये this we have not discussed here about the sequester, they are present throughout the cytosol। Okay, so this is also the incorrect option। Activation of CDK1 requires post translation modification। Yes, ये जो CDK1 जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल, बट इसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन चाहिए। कैसे ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो सकता है, लाइक द V1 प्रोटीन विच इज अ इनिवेटरी प्रोटीन, इट इज इनिवेटिंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इनिवेटिंग। उसके बाद कैक जो कि है एक्टिवेटिंग काइनेज, इट इज फॉस्फोराइलेटिंग इन द थ्योनिन 161 पोजीशन। During this time also it is not activated because यहाँ पे inhibitory protein present था। Okay, later what happens, there is a phosphatase which is known as CDC25। ये जो CDC25 जो phosphatase है वो आके remove करेगा वो inhibitory protein को। During this time only the CDK1 will be activated। So ये जो process जो हो रहा है it is a post translation modification। So option C is the correct option। Okay, next option D, the inhibitor of CDK1 is degraded in the M phase। यहाँ पे कुछ inhibitor present नहीं था, that was here the activation was not done। Okay, so ये जो activation जो present है it is being activated during the M phase, जो कि है एक post translation modification। Thank you everyone for watching this video till the end, and if you like this video please do not forget to subscribe। Thank you।